Hello, good afternoon, everyone. Uh, my name is Mukhtar Patel, and I'm working as VP for Ecoshine Facilities Solutions, and I'm taking care of operations. This is a small introduction about myself. Now, we are talking about the FMJPI group. This is one of the largest and biggest network dedicated only to facility management industry with a vision and mission in mind by Nilesh Bharot. He has initiated it in 2015. Now, today, FMJPI represents entire facility management industry and supporting industries, people across the India for end-to-end solutions on any kind of requirement related to FM industries. Since the inception of FMJPI's role is to connect the missing dots, and in these 5 years, I think, and I'm sure, they've achieved goal successfully. Now, coming back to our today's topic of pre-monsoon preparedness. Now, my dear friends, colleagues, our best teacher for getting ourselves prepared in monsoons, Mumbai rains, you can say. बम्बई की जो बारिश होती है इसका कोई भरोसा नहीं होता है, कहते हैं ना कि वक्त का और बम्बई के बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है. तो since we have been staying in Mumbai for quite some amount of time, we have spent and we have seen a lot of monsoons. काफी बरसातें हमने देखी है, काफी सावन हमने देखा है. तो ये हमारा बेस्ट टीचर है, ये हमारा गुरु है. ये जो बारिश है ये हमको सिखा देता है कि कहाँ कहाँ पे हमारा मतलब कहाँ कहाँ पे गैप्स रह गई है और कहाँ कहाँ पे हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं, जहाँ पे हमको मजबूत होना चाहिए था. हमारे जॉइंट्स हो गए, जो एक्सपांशन जॉइंट्स हो गए, फसाड के विंडोज़ हो गए, या आपके सम पम्प्स हो गए, आपके ड्रेन पॉइंट्स हो गए, या आपके गटर की लाइन हो गई. एंड वो सारी जगह जहाँ से पानी बहता है और पानी को बहते रहना चाहिए. तकलीफ क्या हो जाती है कि जब पानी एक जगह पे रुक जाता है, ठहर जाता है नो, इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग. ओवरफ्लो होता है तो वो कहीं कहीं ना कहीं अपना रास्ता देख लेगा, वो पानी ढूंढ लेगा. तो तकलीफ वहां पे आ जाती है. तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई आने से पहले, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से इन फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज आप लोग सबके सब माहिर हो, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है. वी डोंट रिक्वायर एनी रॉकेट साइंस वाला नॉलेज फॉर दिस. इट इज जस्ट दैट पानी आता है, रुक जाता है, और फिर बाद में तकलीफ हो जाती है उसको निकालने के लिए. तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि भाई व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट. तो जिस तरह से हमारे पास एसेट मैनेजमेंट हम करते हैं, हमारे पास एसेट्स की हिस्ट्री कार्ड्स होती है, उसी तरह से मेरा ये मानना है कि ये मॉनसून का भी हिस्ट्री कार्ड हमारे पास होना जरूरी है. अब हिस्ट्री कार्ड बोले तो क्या कि लास्ट मॉनसून से हमने क्या सीखा, क्या सबक मिला, हमको क्या लेसन मिला है. भाई कहाँ कहाँ लीकेजेस थे, किधर किधर से पानी टपक रहा था, फ्रॉम वेयर वी हैव ऑब्जर्व्ड द लीकेज पॉइंट्स, and what we have done to avoid these points not to erupt or come in future. तो हमने क्या ऑब्जर्वेशंस किया है और उसके अगेंस्ट में हमने क्या स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव्स लिए. तो दिस experience teaches us to how to take care of these leakages during the monsoon and floods नहीं होना. तो देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली. तो सबसे पहले तो हमको, हमारे पास एज बिल्ड ड्राइंग्स होती है जिसको हम लोग देखते हैं कभी कभी, और कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हर वक्त वो ड्राइंग्स लेके हम घूमते रहें. जिस तरह से प्रेशर होता है, जिस तरह से प्रेशर के माहौल में हम लोग काम करते हैं, वी वर्क, इतना हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम बार बार वो मैप्स को रीड करें या ड्राइंग्स को रीड करें और जानें कि क्या है क्या नहीं. तो ठीक है, बट लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पे जस्ट एज एन इनिशिएटिव, कि प्रोएक्टिव इनिशिएटिव, हमें क्या करना चाहिए कि वो एज बिल्ड ड्राइंग का एक प्रिंट आउट लेना चाहिए, एटलीस्ट A1 या A0 साइज में. उसको लेके स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ड्रेन पॉइंट से, ड्रेनेज के पॉइंट से, उसको मार्क करना चाहिए. मार्क करने के बाद हमको हमारी टीम के साथ, जैसे प्लम्बर हो गया,
हमारे हाउसकीपिंग हो गए, अपने सुपरवाइजर्स हो गए, टेक्निकल सुपरवाइजर्स, फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव हो गए, प्रॉपर्टी मैनेजर हो गया, फैसिलिटी मैनेजर हो गए, उनको सबको लेके वो पॉइंट्स है, वो उसको एक डिटेल स्टडी, मतलब लाइक एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए. आफ्टर डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग, you sit across the table, discuss what experience you have done in the past, and because of that, what kind of steps you have taken to eradicate or to address those issues. तो उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, and they all should take a round and go to those areas. और वो ड्रेन पॉइंट जितने भी है उसका चेक पॉइंट्स होना चाहिए, सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, उसको चेक करें, आप जाके चेक करें. वाटर फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर का एक फ्लो होता है, इट हैज टू बी अ सीमलेस फ्लो, दैट शुड ऑलवेज गो. द वाटर आपका ठहरना नहीं चाहिए. वो ड्रेन पॉइंट, पहले से आप टेरेस पे हो, वर्टिकल आप जाइए, पहली बार टेरेस पे जाइए, टेरेस से आप सीधा देखिए कि आपके पाइपलाइंस के थ्रू पानी प्रॉपरली फ्लो हो रहा है कि नहीं. आने के बाद वो आपके जो सम पंप्स है उसमें जमा हो रहा है कि नहीं. सम पंप्स में आने के बाद यू हैव सम पंप्स, ओके, सम पंप्स हमेशा N+1 सिस्टम में होता है, तो उसका जो लेवल सेंसर है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. एंड वो लेवल सेंसर वो एक्टिवेट करेगा आपके सम पंप को, जो पानी सक करने के बाद वो पंप आउट करेगा पानी इनटू द ड्रेन, और वो पास आउट करेगा जहाँ पे, मतलब इन इन म्युनिसिपलिटी ड्रेन या कहीं पे भी जो भी इसको छोड़ना है, इट शुड गो आउट ऑफ योर बिल्डिंग प्रीमाइसेस, वेदर इट इज कमर्शियल बिल्डिंग या रेसिडेंशियल बिल्डिंग. द वाटर शुड नॉट स्टॉप और शुड नॉट कलेक्ट, इट शुड मूव आउट of that of the premises which you are managing, whether it is your commercial building or your residential building or your malls or theaters or whatever your property that you are managing. तो वो फिक्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वंस यू स्टडी दैट, तो फिर उसके बाद में प्रेपरेशंस में ये तो एक हो गया कि आपने एज बिल्ड ड्राइंग ली एंड उसके ड्रेन पॉइंट्स वगैरह आपने चेक किए, एंड आपने उसका पूरा कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन किया, एंड उसका आपने देखा कि उसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह से पानी को पंप आउट करना है बाहर. तो आपके पास होना क्या चाहिए कि आपके पास सारे लिस्ट ऑफ वेंडर्स होना चाहिए. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फसाड का, अगर आपके पास फसाड है, बिल्डिंग फसाड है, इन कमर्शियल बिल्डिंग्स फसाड होता है, उसके अंदर यूनिटाइज पैनल होते हैं, तो सेमी यूनिटाइज पैनल होते हैं, उसके विंडोज होते हैं. विंडोज आर इन द फॉर्म ऑफ साइड हंग विंडोज या टॉप हंग विंडोज. टॉप हंग विंडोज जो होते हैं वो फायर से रिलेटेड होते हैं, एंड साइड हंग विंडोज इज ऑल्सो रिलेटेड टू फायर. इन केस ऑफ फायर, if the fire brigade, if they want to enter inside the building, so that is used. और the top hung जो होते हैं, that is also for the smoke vent, आपका smoke जो है उसको बाहर जाने के लिए. But these windows also can become a cause for water ingress inside the building premises. तो आपको वो फसाड के सारे चेक पॉइंट्स होना जरूरी है. अभी फसाड की भी आपके पास एज बिल्ड ड्राइंग होना इंपॉर्टेंट है. आपका लास्ट ईयर का जो मॉनसून हुआ है उससे रिलेटेड जो भी लीकेजेस है उसकी स्टडी आपके पास है. यू हैव दैट स्टडी विथ यू, बिकॉज यू हैव टेकन सर्टेन प्रिकॉशंस एंड यू हैव अवॉइडेड दैट दिस, ये साल वो नहीं होगा. तो वो स्टडी आपके पास होगी. तो इंटरनली जितने भी फसाड से जहाँ से भी लीकेजेस होते हैं, यू हैव योर चेक पॉइंट्स, यू हैव दी पोस्टेड्स, जहाँ पे इसको आपको आपने अंदर ग्लास में उसको आपने पोस्टेड चिपकाया है, जस्ट फॉर योर मार्किंग, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ से पानी आया था, इनग्रेस हुआ था, तो वी शुड स्टॉप दिस फ्रॉम हियर. एंड द मेजर्स आपने उसको अप्लाई किए, सिलिकॉन इंजेक्शन या आपके फ्लेक्स टेप्स जो होते हैं आजकल निकले हुए, विच कैन बी यूज्ड इन हॉट एंड वेट एंड ऑल्सो इन अंडर वाटर सर्कमस्टांस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये तो आपके एज बिल्ड ड्राइंग से रिलेटेड जो आपके जो चेक्स होते हैं वो है. प्लस आपके लिस्ट ऑफ वेंडर्स के अंदर जहाँ पे मॉनसून शेड्स की रिक्वायरमेंट होती है. इन मुंबई आपको मॉनसून शेड्स के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है फ्रॉम द BMC. तो BMC का परमिशन लेने के लिए आपको एडवांस में यू हैव टू राइट अ लेटर, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट, एंड क्लाइंट के लेटरहेड पे यू हैव टू अप्लाई टू BMC, एंड देन BMC विल गिव यू परमिशन टू टाई द शेड. तो शेड के लिए यू हैव अ वेंडर हु कम्स, who's got a proper height and length, which कौन सी एरिया कवर कर रहा है, कितना कर रहा है, with everything. एंड ये हो गया आपका परमिशन along with the shade. Secondly, you must be having last year's tarpaulin sheets with you.
तो टार्पोलिन शीट्स जो आपके होते हैं वो आपके लिस्ट में होना चाहिए। एंड लिस्ट में आपके क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो टार्पोलिन शीट्स होता है, आपके डी वाटरिंग पंप्स होते हैं। डी वाटरिंग पंप्स टू टाइप्स के होते हैं। वन इज डी वाटरिंग डीजल पंप विच कैन स्टार्ट विथ जस्ट अ पुल ऑफ अ स्ट्रिंग एंड विद यू हैव अ पाइप फॉर इट, जो सक्शन होता है, जो कहीं पे आप उसको सक करते हैं विद अ फुटफॉल, जो पानी को सक करेगा एंड पानी विड्रॉ करके इट विल जस्ट फ्लश आउट द वाटर ऑफ द बिल्डिंग, आउट ऑफ द बिल्डिंग प्रीमाइसेस। तो वो आपके पास होना चाहिए। डी वाटरिंग पंप अलॉन्ग विथ द पाइप्स, जो भी उसका सक्शन एंड डिस्चार्ज का उसका जो हेड होगा, हेड डिस्चार्ज एंड सक्शन उसका जो भी डायमीटर होगा एज पर मे बी 4 इंच और 2 इंच डिपेंड्स, तो वो आपके पास होना चाहिए। एंड सेकेंडली अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल डी वाटरिंग पंप है तो यू शुड हैव दैट लेंथ ऑफ वायर विथ यू, length of wire in the sense 100 meters होना चाहिए, and it should be in such a way either it is the male female has to be industrial socket, या तो it is या भी normal plug in type होगा, तो you need to have it covered completely with plastic from both the ends and properly tied with a cable tie and all, तो so that water does not ingress। कहीं पे भी आपको वाटर इनग्रेस होता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाँ उसमें सेफ्टी का एंगल आता है, लाइक इन केस द वाटर इज इनग्रेसिंग इन दीज इलेक्ट्रिकल यूनिट्स देन इन दैट केस इट विल बिकम अ कॉज फॉर शॉक। तो कहने का मतलब है कि शॉक से आपको अवॉइड करना है। एंड आपके पीपीई किट्स का भी आपके पास लिस्ट होना चाहिए। यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ पीपीई किट्स where you have gumboots, you have raincoats, you have helmets, you have goggles, you have gloves, okay? तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। कहीं पे अगर अम्ब्रेला की ज़रूरत है, yes, you can use umbrellas as well, and especially for housekeeping people, these kits, the kits are there for both the MEP and also housekeeping and also the security team। ये इनके लिए होना ज़रूरी है, the monsoon kit, and at the same time you need to maintain a stock of bleaching powder, because क्या होता है कि whenever there is a rainfall, जब भी open areas है, so there is it becomes a cause of gathering moss उसमें काफ़ी greenery हो जाती है, slippery हो जाता है, and there is a it can become a trip hazard where people can slip and they can break the bones। तो वो उसके लिए आपके पास bleaching powder होना चाहिए और काफ़ी bleaching powder होना चाहिए, उसको stock आपको maintain करना पड़ेगा in that case। And from the safety point of view, आपके जितने भी डीबीज है एंड जो जो एक्सटर्नल एरिया में है एंड उसको आपको कवर करना है, तो यू शुड हैव इनफ plastic or the garbage bags with you to cover all these the DB units and the electrical, although it is all IP rated, water ingress ज़्यादा नहीं होता, but there are chances because sometimes what happens, they are not locked properly, उनकी lock and key बराबर नहीं होता है, because of which it enters, the water enters, so that needs to be locked properly and tied along with the plastic with rope or any wire sort of a thing, wire in the sense it is not a live wire 100%, any waste wire which can be tied that, because वो tight उसको पकड़ के रखता है, so you need to take care of that with all your external जितने भी DVs होते हैं, लाइटिंग के DVs होते हैं, पावर सॉकेट्स, पावर के DVs होते हैं which are exposed to the atmosphere, तो उसको आपको टाई करना है, you need to take care of that। and at the same time आपके रूफ टॉप से एंड आपके टेरेसेस से, आपके बेसमेंट से, आपके जितने भी ड्रेन्स है, सारे ड्रेन्स एंड गटर्स एंड जालीज, उसको आपको completely फ्री रखना है with the flow of water, like they should be all free of any debris or any kind of kachra on the jali which gets settled। so pre monsoon checks में आपके ये सारे drain points आते हैं जिसके अंदर आपको check करना है, because that will become the cause of water to get accumulated, and once it is accumulated, the water is accumulated, so in that case what will happen, वो cause हो जाएगा seepage का and leakage का, you know, from any of the loopholes, from any of the leakage points, वो आपको देखना है। and in some places what we have experienced is that आपके जो रूफ होते हैं या तो टेरेसेस होते हैं या रूफ टॉप्स होते हैं, you put some डामर, that is bitumen, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपके पास इतना मौका नहीं होता है कि उसको कम्प्लीटली ब्रेक करके एंड केमिकल कोटिंग करके
एंड पॉलीमर कोटिंग एंड ऑल दैट, वो जो भी सिविल इंफ्रा वाले करते हैं, तो उतना वक्त आपके पास, उतना टाइम नहीं होता है, तो यू डू डामर वर्क, बिटुमिन वर्क आप करते हो, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। एंड मैक्सिमम आप ये देखा गया है, वी ऑलवेज फाउंड दैट द एक्सपांशन जॉइंट्स से काफ़ी पानी आता रहता है, वहाँ से भी लीकेजेस होते हैं। But we have experienced in Mumbai that these expansion joints are covered with the help of the drain tray with a drain pipe, and उसको कहीं पे लाके एक जगह पे इसको terminate कर दिया जाता है, where the water is going directly in the way in the drain point. So these are taken care, and the high risk area like your HTA-LT panel and your HVAC panel, which are always in the basement and above the ramp or maybe above the common areas. So and they always passes through the your expansion joints, and these becomes the causes. ये cause है जहाँ से ये पानी टपकता है, बूंदे वहाँ से आती है, seepages and leakages होता रहता है। तो we have experienced that. So what प्री मानसून में हम लोग क्या कर सकते हैं? We can recommend and suggest the client कि we should have a shade underneath, a पतरे का shade which is not much costly, which is anchor fastened to the roof. अगर पानी कुछ भी आता है तो वो उस पे गिरेगा, it will fall on the on those trays, zinc trays. पतरे का जो ट्रे है, any company, I don't want to do any branding of any company here, पतरे का शेड होता है, उसको बनाओ, cover it so that anywhere the leakage due to PT slab doesn't fall on the transformers or HTLT panels or on the breakers or any of the electrical circuit. तो वो आप ट्रे ऐसा लेके जा सकते हैं completely and with a slope so that the water falls on it, and because of the slope it falls to a particular through a drain, and it comes down through that drain to a drain point. So your electrical section is completely safe of any short circuit. So इसका ख्याल रहे, it is out of experience and you people are all experienced and you've got all the experience to share, and because of that we are safe. I mean, we have taken the precautions. बाकी it all up to you can call it act of God, कुछ भी हो सकता है, even after taking precautions. तो ऐसा है, बट हाँ ये होता है कि हमने प्रिपरेशंस में कोई कमी नहीं छोड़ी। वाई? किस लिए? बिकॉज द क्लाइंट इज हैप्पी, द क्लाइंट इज हैप्पी with us because we are the service provider company in only one scenario, एक केस में, which is the key for us to continue with the contract with the client for a number of years, and that is the trust factor, because we care for that client as we own that property, as it is our own home. अपना खुद का अपना एक घर है, जिस तरह से हमें हमारी घर की फिक्र होती है, we trust, we take care of a family, तो वैसे ये भी हमारी फैमिली का एक पार्ट है, हमारा क्लाइंट हमारे फैमिली का एक पार्ट है। तो ये फिक्र जब आती है ना, तो हमारे अंदर जो एक डर सा जो रहता है वो निकल जाता है, एंड वी एंजॉय टू वर्क ऑन द प्रॉपर्टी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट नहीं, आई एम गेटिंग माय रोजी रोटी, आई एम गेटिंग माय इनकम because through this client, and I need to take care of client so that the client is happy, and at the end of the day I can justify myself the kind of salary I take home, through which I feed my family members, and they are also safe because we are treating this client as our own client, as our own family member. Likewise we treat our own family members at home as our family members. So we need to take care of the client in that particular fashion, in that particular ways. So once we have this fikr or worrisome over this particular client, and this pre-monsoon or anything, any act of God which is going to happen, which is not in our control, can be taken care quite easily. Okay, and experience teaches us a lot. We have been running a lot of properties. You people have been running properties since last 10 years, 15 years, 5 years minimum, and plus 20 years down the line. So you people are expert. It doesn't require a rocket science. And
considering this, we can always move ahead with all the kind of experience that we've gathered in all these years. So this is very important, that okay, because before the client could come to us, we should have a list of pre-monsoon checks, and the pre-monsoon checks you already have when you enter the building right from the gate. Okay, right from the gate. But what we do is that we go in a reverse direction. We have a terrace, because when the rains come, the monsoon comes, it surpasses all the standards. हमारे जितने भी सारे स्टैंडर्ड्स है ऑफ हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स है ऑफ you can say the international standards, American standards, or Indian standards, it surpasses all the range. This range surpasses and validates all the checks. कितना भी आप स्टैंडर्ड इसको मेंटेन करो, पानी अंदर आएगा, लीकेज होगा, ड्रिपिंग होगा. बट हमारी प्री मॉनसून जो प्रिपेयर्डनेस है will ensure that it will minimize these leakages, this dripping of water, and many things after effects or the causes of the monsoons, because we don't know how the monsoon is going to react. It is act of God, but we have been given certain control that we can take care of by taking all these pre-monsoon preparations activities we carry on site. And at the same time, we have to keep the client also in loop, take necessary required approvals in place, whether it is commercial, financial, and the n number of quotations that are required, comparison codes, whichever is the best and the low and economical, viable to the client. Because understand one thing, we are working with client as a partner, as a vendor partner, as a consultant, and as a consultant, we need to be true from the bottom of our heart. We must have a very good heart, and heart of servicing the client. So everything will fall in place. It will become very easy for us to find the solutions. So my request to you people is that always feel very free to discuss any issue with the client, and don't keep it to yourself. Keep a pre-monsoon meeting with the client with all your checklist preparedness, with all your safety gates, and with the people that you work with, your team of MEP team, the housekeeping team, the security team, right from the gate up to the terrace and to relevant floors, to your basements, to your parking area, to your driveways, to your what do you call it, the plant rooms, and the entire the common areas and the client area. Now, what we have experienced is that there are leakages which are happening from the facade, in the facade. So the reason, the cause is that what kind of pre-monsoon check you're going to do. So there is a simple method, like you have a facade cleaning vendor. वो facade cleaning vendor जो आपका है, उससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसके साथ आप facade की ड्राइंग ले सकते हैं, and then through the cradle वो नीचे आ सकता है, and you can use a water का spray, jet spray. You can take a vertical I mean gravity के थ्रू आपका जो पानी का कनेक्शन है जो टेरेस पे है, उससे लेके थ्रू पाइप you can use a slight pressure of water onto the facade to check if there is any water ingress. Although it is not that foolproof system, but at least if you can use that water ka spray and which is you can use it against the glass facade, you can, and somebody is standing inside under facade ke andar onto the floor, inside of the floor, to check is there any water ingress. So like that you can cover the entire building within 15 days of time, and you can have that list ready. We tried here, and from this there was no silicon. See, if you find any silicon which is spilled out or eaten by birds, that can come out of it. I mean, you can treat then and there itself with a silicon injection. You can order silicon injection on site, and through the cradle, you can treat it externally from your side through that facade cleaning vendor who is having a cradle, or using a Spiderman technique to treat the facade glass.
So that is one you can do. And after during the monsoon also, you have taken all the you have done all the preparedness, you have taken all the initiative कि यहाँ से पानी नहीं आए या नहीं आना चाहिए, फिर भी आ गया, तो still it is minimized. So 10 अगर points है leakages के, so at least 80% या 90% you have covered. There may be 10% of that which is not which is left or maybe not covered that particular area. So that can be taken care and that can be treated also. So that is there. Then you have chajjas, and on the chajjas you have a gutter line, and on that you have a drain point through where the water comes out. Okay, so वो drain point को आपको जाके check करना है. तो all the drain points you need to check. You know, pre-check has to be done so that the water does not accumulate anywhere, and the flow is maintained right from the terrace to the sump pumps, and from the sump pumps out into the municipal drain. The water is completely flushed out and there are no leakages observed. So this is what I feel that I have covered maximum area. If I have left out on something, again, it is quite possible because I am also a human being like you. So you people are subject matter expert in your own field, and I thought of sharing this on this particular platform to just as a knowledge sharing experience with you people. So I thought this is the best platform to talk to you all, and we can take necessary required step. And I thank you, all of you, for the wonderful time for listening to me. And we will come back again, and you can share this experience of yours, and you can share my videos, and I'm welcome with all your questions and your doubts, and anything that is possible for me, I'll come back to you with the kind of solution which is practically possible on sites with where it is economically viable and sasta sundar tikau ilaj as far as the monsoons, leakages, or floods are concerned onto the site. So thank you very much for listening to me. I will end my show, and at the end of the show, I would like to say a few words, exchange few words on basis of this COVID-19 pandemic. Stay safe, follow all the pandemic rules and regulations set by the government of India and government of Maharashtra. Timely updates, okay, wear masks and avoid crowd, avoid maintain social distancing, and wash your hands regularly with soap or sanitize it, and take care of yourself and take care of your family, because understand one thing, you are important to yourself, not only yourself but also for your family. So if you're safe, your family is safe. So take care of yourself, maintain good health, eat good, keep a positive attitude, grab responsibilities, be planned, be scheduled, do more than expected by your family and also by your client. Be an extra miler. Thank you very much. And I am very happy that I am able to share with you whatever knowledge I had with me. Thank you very much. I am a learner and I'm a student. I will always learn and exchange knowledge from you, and you can learn and exchange knowledge from me as well. Thank you very much for listening to me. Have a wonderful day. We will meet again. Enjoy yourself. Stay blessed and stay safe. Thank you very much.